Welcome into Eminence Vidyapeeth. Today we are going to discuss a new topic which is solar system temperatures. In this topic we are going to brief the temperatures of solar system planets. This topic is in continuation to our previous topic, basics of solar system, in which we studied about the solar system, planets in solar system, and their basic properties. Here in this solar system temperature topic, we are going to discuss the temperature of planets and the analysis of planet temperatures with reference to their distance from the sun and other factors which are responsible for controlling the planet temperature and for any deviation of order with reference to sun distance. We have already discussed in our solar system there are 8 planets which move in their elliptical orbits around the sun. Earlier Pluto was also considered as ninth planet, but very soon it got declared dwarf planet in 2006. So at present there are 8 planets in solar system which move in their elliptical orbits around the sun. Out of these 8 planets, first 4 planets from the sun are Mercury, Venus, Earth and Mars. These inner planets are also known as terrestrial planets because they have solid surfaces. The next 4 are, we can say the last 4 are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, which are called outer planets or giant planets. These are in outer solar system and do not have hard surfaces. Instead, they have swirling gases above a core. So, Jupiter and Saturn are gas giants and Uranus and Neptune are ice giants. Why? Because due to their structure and atmosphere. Jupiter and Saturn, which are fifth and sixth planet, are gas giants because these are composed primarily from hydrogen and helium and have no solid surfaces, while Uranus and Neptune are composed of heavier elements such as water, ammonia and methane in frozen form, so-called ice giants. Here, this is our solar system, star sun, and these 8 planets are solar system here shown with reference to their distance from the sun and their elliptical orbits. From the sun, first is Mercury, second Venus, third Earth, fourth Mars, fifth Jupiter, sixth Saturn, seventh Uranus and eighth Neptune. Today's topic is solar system temperature. So, for calculating temperature, how we consider the temperature of the planet? So, here we consider mean temperature, which is calculated as the average temperature over the whole surface of the rocky planets and again averaging the temperature during day and night. So two-way averaging of surface temperature and day night temperature का जो final average निकलता है, that is considered at the mean temperature of the planet. Here planets are shown like see here Venus, Earth, etc. and their temperature is also shown. This will more clearly is visible in next tabular form. See, now our topic is solar system temperature. So here we discussed about the factors which determine or responsible for the planet temperature. So major factor to contribute the temperature of the planet is their distances from the sun, because all the planets receive heat, light, temperature from sun. So जितना सन से पास होगा उतना हीट टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा. So temperature is inversely proportional to planet distance from the sun. This is the main contributor factor
to calculate the planet temperature. But the second factor, the nature and composition of the planet, is also contribute in planet temperature, because planet का जो structure है, उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर किस चीज का बना है, गैस है, रॉक्स है, एटमॉस्फेयर कितना डेंस है, all these parameters control the amount of heat radiated by the planet as well as the heat retained by them. So nature and composition of the planet control the heat retained and radiated by the planet. So factor number 2 is superimposing on factor number 1, and factor number 1 and 2 मिलके फाइनल टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट डिसाइड करते हैं. जितना प्लैनेट रिटेन करेगा, जितनी ज्यादा हीट, टेम्परेचर जितनी ज्यादा होगा, जितना रेडिएट करेगा उतना ही कम होगा. सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लैनेट retain capacity and inversely proportional to radiating capacity. So according to the factor 1, distance wise, the Mercury should be the highest temperature planet, and then temperature should be continuously decrease in the same distance wise order, and Neptune should be the coldest. But the factor number 2, which is nature and structure of the planet, provide two deviations with reference to nearest and farthest planets, which are detailed in next slide. Here the planets are listed in this particular row with reference to distance from the sun. Mercury जो सबसे पास है, then Venus, Earth, Mars and Neptune is the farthest planet. इनके मीन टेम्परेचर भी यहाँ पे मेंशन है, और ये उनका ऑर्डर भी मैंने था कि कौन हॉटेस्ट है, कौन कूलेस्ट है. तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो विद रेफरेंस टू पॉइंट नंबर 1 जो है टेम्परेचर घटते हुए जाना चाहिए. तो यहाँ से देखते हैं 15 माइनस 16 माइनस थर्ड नंबर से लेके 6 तक घट रहा है, लेकिन फर्स्ट 2 में एंड लास्ट 2 में देयर इज अ डेविएशन, एंड दैट डेविएशन इज ड्यू टू नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द प्लैनेट which got superimposed into the distance from the sun factor. And finally we found that Venus is the hottest planet, not Mercury, and Uranus is the coldest planet, not Neptune, and rest are in order with reference to the distance from the sun. This is the actual temperature and their actual ranking. So why Venus is the hottest planet? So here we can see, अगर हम डिस्टेंस वाइज चलते हैं तो हाईएस्ट टू कोल्डेस्ट ऑर्डर था, वो मरकरी को होना चाहिए था. बट फैक्टर 2 जो था नेचर एंड कंपोजिशन से डेविएशन हो गया. जो सेकेंड नंबर का था वीनस वो हॉटेस्ट हो गया, और मरकरी उसके बाद हो गया, और जो सेकेंड लास्ट था वो कूलेस्ट हो गया, और लास्ट वाला हो गया. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का डेंस एटमॉस्फेयर है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? दैट बिहेव्स एज अ ब्लैंकेट. वो डेंस एटमॉस्फेयर है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है. तो हीट की जो रिटेन कैपेसिटी है वो वीनस की ज़्यादा है, जबकि मरकरी का जो एटमॉस्फेयर है वो पतला है, तो वहाँ से हीट रेडिएट हो जाती है. तो ड्यू टू दिस नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस विच इज मेड अप ऑफ डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, वो रिजल्ट करता है वीनस को द हॉटेस्ट प्लैनेट. इन द सेम वे यूरेनस जब फॉर्म हुआ था तो बहुत कोलिजन से नॉक आउट करके फॉर्म होता है. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरेनस इसकी जो इंटरनल हीट थी पूरी की पूरी डिसिपेट हो गई. सो इसके अंदर हीट ही नहीं है यूरेनस के. सेकेंड क्या है कि जो इसका एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है उसमें मीथेन बहुत कम है इन कंपेरिजन टू नेपच्यून. सो मीथेन क्या करती है? हीट रिटेन करती है. सो यूरेनस में मीथेन भी नहीं है, और ड्यूरिंग फॉर्मेशन इसकी कंप्लीट हीट डिसिपेट हो गई. सो न तो इसमें इंटरनल हीट है, न एटमॉस्फेयर में मीथेन है जो हीट को रिटेन करे. सो यूरेनस इज द कोल्डेस्ट वन, एंड नेपच्यून के उसके बाद आता है. सो दीज आर द रीजंस which are providing deviation. We will discuss
here more detail. This is deviation 1, this is deviation 2. So these are mentioned here in the list. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मार्क्ड है डिस्टेंस वाइज फ्रॉम द सन, मरकरी फर्स्ट था और नेपच्यून 8th, और यहाँ पे ये डेविएशन हो गया। सेकंड में जो वीनस है हॉटेस्ट है और जो यूरेनस है वो आपका कोल्डेस्ट है। इसी को भी और डिटेल में जाएंगे तो वाई वीनस इज हॉटर देन मरकरी। सो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो 90 टाइम थिकर देन अर्थ है और कंपोज्ड ऑफ इंटायरली कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना थिकर है 90 टाइम्स, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है जो ब्लैंकेट की तरह काम करती है, हीट को ट्रैप करके रखती है फ्रॉम द सन और स्केप करने से बचाती है। इसलिए इसका टेम्परेचर वीनस का ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि मरकरी का जो एटमॉस्फेयर बहुत डेंस नहीं है, बहुत कम है, हल्का है। सो उसमें क्या है जो टेम्परेचर का स्विंग है डे और नाइट में बहुत ज़्यादा है, 430 से लेके -170 है। तो अगेन जब इसका एवरेज करते हैं तो कम हो जाता है। इसके दो रीजन हो गए, एक वीनस का थिक एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड और मरकरी के टेम्परेचर स्विंग, इन दोनों फैक्टर से वीनस इज हॉटर देन मरकरी। अब अगर नेपच्यून में जाते हैं और यूरेनस वाले केस में, तो यूरेनस का जब बना था तो पूरा हीट डिसिपेट हो गया, तो अंदर इंटरनल हीट भी नहीं है एक भी, और इसकी जो एटमॉस्फेयर है उसमें मीथेन नहीं है, इसके कारण इसकी हीट बहुत कम है। हीट लॉस हुआ था कोलिजन से, तो अंदर हीट नहीं है, लो इंटरनल हीट है, और मीथेन कम होने से हीट रिटेन नहीं कर पाता। तो दैट्स वाई यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट एंड नेपच्यून इज हॉटर। थैंक्स।